अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू डिस्कस द टेस्ट पेपर 2 ऑफ फेज 2 फिजिक्स क्लास 9। सो आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। So the grade 9 physics test paper 2 phase 2 which composed of chapter number 5, 6, 7, 8 and 9. So I'm going to discuss the objective type paper in which you have given total 12 MCQs and you have to solve it in 15 minutes. And the first MCQ is the unit of gravitational force is, options are A kilogram meter, B kilogram per cubic meter, C kilogram second and D Newton. So ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ऑल्दो इट इज अ फोर्स, सो फोर्स को हम हमेशा न्यूटन में मेजर किया करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूटन। द सेकंड एमसीक्यू, एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ऑप्शंस आर ए हाइड्रोलिक प्रेस, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर एंड डी ऑल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एप्लीकेशन होती है दैट इज बैरोमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। थर्ड एमसीक्यू, potential energy in the body is due to, options are A height of liquid, B force applied, C work done and D weight of the body. So potential energy जो है वो किसी भी body में उस body के weight की वजह से होती है। So option D is correct, that is weight of the body. Clear? The fourth MCQ, system international unit of efficiency is, options are A gram per meter, B kilogram per meter square, C Newton per meter square and D no unit. So efficiency का कोई भी unit नहीं होता। So option D is correct, no unit. The fifth MCQ, heat is transferred due to change in, options are A temperature, B height, C shape and D none of these. So heat जो है वो transfer होती है due to the difference of temperature. Clear? So option A is correct, due to change in temperature. The sixth one, heat energy required to change liquid into gas is latent heat of, options are A vaporization, C B fusion, C evaporation and D all of these. So वो heat energy जो कि liquid को further gas में convert करती है, that heat is called the latent heat of vaporization. So option A is correct. The seventh MCQ, changing of a liquid into vapors without heating it is, options are A vaporization, B fusion, C evaporation and D all of these. So liquid का vapors में change होना without heating, heat किए बगैर, that is called evaporation. Clear? So option C is correct. The eighth MCQ, the rate of volumetric expansion in liquids and gases depends on, options are A heat provided, B force applied, C original volume and D none of these. So the rate of volumetric expansion in liquids and gases means कि liquid और gases में जो volumetric increase हो रहा होता है, expansion हो रही होती है, that basically depends on the original volume. Clear? So option C is correct, original volume. The ninth MCQ, the mode of transfer of heat by waves, options are A convection, B conduction, C radiation and D none of these. So heat का transfer होना waves के through, इसको हम कहते हैं radiation. So option C is correct. The 10th MCQ, transfer of heat takes place to, options are A stabilize the body as the surrounding, B conduction, C radiation and D none of these. So transfer of heat take place to stabilize the body as the surrounding means के अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी environment में आप एक चाय का कप ला कर रखते हैं तो उस चाय में से हीट निकलती रहती है, मीन्स कि हीट का ट्रांसफर होता रहता है और हीट तब तक ट्रांसफर होती है जब तक उस चाय का टेम्परेचर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर? सो दैट वाई to stabilize the body as the surrounding. So option A is correct. 11th MCQ, thermal climbers uses dash as thermals to climb up. Options are A thermals, B convection current, C elliptical and D none of above. So thermal climbers जो हैं वो convection current को use करके और वो climb up होते हैं, means कि वो fly करते हैं. Clear? So option B is correct, convection current. The 12th one, the rays of light if enters in the greenhouse they could not escape is called, options are A photosynthesis, B greenhouse effect, C convection and D conduction. So लाइट की रेस का एंटर होना मीन्स किसी भी ग्रीन हाउस में एंटर होना और उसके बाद वो लाइट की रेस बाहर को escape नहीं होती, बाहर नहीं निकलती. So that is called basically the greenhouse effect. So option B is correct, greenhouse effect. Clear?
So I hope you multiple choice questions आपको clear हो गए होंगे. So now move to the next type, which is subjective. Now the subjective type paper consists of two parts, part 1 and part 2. And in part 1 there are 3 parts of further short questions. And in each part you have to attempt the 5 short questions out of 8. So I'm going to discuss the first part, which is question number 2. Attempt any 5 parts from the following. So आपने in 8 part में से कोई से best 5 parts आपने attempt करने हैं. और so question number 1. डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो आपने जस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करना है. बट रिमेंबर वन थिंग के पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. सो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रेजेंट किस तरह से करना है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर से आप सेंटर में आप हेडिंग दे सकते हैं रोमन में या नंबर्स में 1. क्लियर. और उसके बाद हम सेंटर में हम हेडिंग देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्लियर. एंड देन हम लेफ्ट लाइन पर नेक्स्ट लाइन पे सब हेडिंग आप देंगे डेफिनेशन. एंड देन आप इसको फर्दर डिफाइन करना है. It is the velocity of the satellite which moves around the earth at specific height. Clear? और इसी के साथ आप orbital velocity का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. V orbital is equals to under root g of h into r plus h. Clear? The second part, what do you know about geostationary satellites? तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं? So geostationary satellite, अब यहाँ पर भी आप heading बना सकते हैं geostationary satellite. And then you can write the answer as geostationary satellites are the satellites whose velocity relative to Earth is 0, and these satellites remain stationary with respect to the Earth at the height of 42,300 km from the surface of the Earth. These are used for global TV transmissions and other telecommunication purposes. Clear? Geostationary basically यहाँ पे हम इसके नेम से ही हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं. जियो मीन्स अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ. तो ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के कोरिस्पॉन्ड आपको ऐसा फील हो कि वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, ऑल्दो वो मूव कर रहा होता है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो अर्थ की स्पीड के साथ मैच कर दी जाती है. तो जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा बल्कि रुका हुआ है. क्लियर. द थर्ड वन, स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आपने लॉ को स्टेट करना है. सो यहां पर आप सेंटर में हेडिंग देंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड देन यू कैन राइट द सब हेडिंग इन द लेफ्ट अलाइन like statement. So you can state it as every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Clear? Similarly, इसके साथ भी इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं that F is equals to G m1 m2 over d square. Clear? The fourth part, what do you know about global positioning system? That is GPS. So GPS के बारे में आप क्या जानते हैं? अगेन यहाँ भी हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड देन यू कैन राइट द आंसर एज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर. GPS consists of 24 Earth satellites and these satellites revolves around the Earth twice a day with a speed of 3.87 km per second. Clear? The next part, define work and what is its system international unit. अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई हैं, डिफाइन वर्क और फर्दर उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है. यहाँ पर भी हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे वर्क एंड देन हम नेक्स्ट लाइन पे सब हेडिंग देंगे लेफ्ट लाइन पर डेफिनेशन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिफाइन करेंगे. वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. एंड देन अगेन हम सब हेडिंग देंगे नेक्स्ट लाइन पर यूनिट ऑफ वर्क व्हिच इज जाउल्स. ओके. And further you can define the joule also. So again हम left line पर सब heading देंगे joule और further आपने joule को define कर देना है. The amount of work done will be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of a force. Clear? The sixth part, when does a force do work? Explain. कि force जो है वो कब एक work perform करती है, तो आपने इसको explain करना है. तो इस question की हम सब heading इस तरह से बना सकते हैं that force do work. Okay. So you can write the answer as when force acts on the body and the body covers some distance in the direction of force, then we said work is done, and this work can be calculated by the formula W is equals to F into S. Clear? The seventh part, define energy and give 2 types of mechanical energy. So आपने energy को define करना है और आपने further इसकी कोई सी 2 types भी mention करनी है. So you can first of all define it as a body possesses energy if it is capable to do work, and then you can write the heading types of mechanical energy and that is kinetic energy and potential energy. Clear? The eighth part, what is meant by the term power? Power को first of all आपने यहाँ पर define करना है. So again यहाँ भी हम center में main heading देंगे power and then left line पे हम sub heading देंगे definition and you can define it as rate of doing work with respect to time is called power.
Clear? And you can also write the formula power is equals to work over time, which can be represented as the P is equals to W over T. Clear? Now move to question number 3. Attempt any 5 parts from the following. Again, you have to choose the best 5 short questions out of 8. And the first one, define gravitational potential energy and give at least one example. So आपने gravitational potential energy को define करना है. So इसको हम किस तरह से define करेंगे? The energy present in a body due to its height is called gravitational potential energy. For example, the stored water in dam and energy of a stone lying on the roof. Clear? So these all have the gravitational potential energy. And the second part, why does the atmospheric pressure vary with height? So इस question की हम heading इस तरह से बना सकते हैं, atmospheric pressure vary with height, and you can write the answer as we go high in the atmosphere, the density of the air becomes low, and due to this reason, atmospheric pressure decreases as we go higher. Clear? The third one, state Pascal's law. तो आपने again Pascal's law को state करना है, and then you can write the main heading as Pascal's law, and then you can write the subheading left align in the next line, that statement, and you can state it as pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without the loss of all the other parts of the liquid. Clear? The fourth one, what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या होता है? तो अगेन इसकी भी हम मेन हेडिंग बना सकते हैं atmospheric pressure, and then you can write the answer as the earth is surrounded by a cover of air is called atmosphere. It extends to a few hundred kilometers above sea level, just as certain sea creatures live at the bottom of the oceans. We live at the bottom of a huge ocean of air. Air is the mixture of gases, and the density of air in the atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up. Clear? And the fifth one, define Hooke's law. तो आपने Hooke's law को define करना है. So again यहाँ भी हम main heading देंगे Hooke's law, and then हम left line पे sub heading देंगे statement, and you can state it as the strain produced in the body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. And the mathematical formula, stress is directly proportional to strain, and stress over strain, that is equals to a constant. Clear? And the sixth part, what is strain? So again strain क्या होता है? Again यहाँ भी हम main heading देंगे strain, and then you can write the answer as a stress can produce a change in shape, length or volume of an object, and a comparison change caused by the stress with the original length, volume or shape is called strain. Clear? The seventh one, what is meant by internal energy of a body? तो एक body की internal energy से क्या मतलब है? So यहाँ भी हम main heading देंगे internal energy of a body, and then you can write the answer as the sum of kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and particles of a body is called the internal energy. Clear? The eighth one, define specific heat. तो आपने just specific heat को define करना है, and then हम main heading देंगे specific heat, and then आप सब heading देंगे definition, and then उसको further आप define करेंगे. So I hope ये part आपको clear हो गया होगा. So now move to question number 4. Attempt any 5 parts from the following. Again, you have to choose the best 5 short questions out of 8. And the first part, write down some examples of expansions of solids. तो solids की expansion की कोई सी आपने examples यहाँ पर mention करनी है. Like the first one, pipes passing through deserts and plains are curved to allow expansion and contraction due to change of season. While lying rail tracks, gaps are left at joints so as to avoid damages caused by expansion or contraction. Clear? जैसा कि सहराओं में या plain areas पे जो आपकी पाइप्स लाइंस जहाँ पे बिछाई जाती हैं, अब उनमें काफ़ी जो है उनमें कर्व जो है वो रखे जाते हैं, ताकि वहाँ पर अगर एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हो तो उसमें इतनी स्पेस हो कि वो इजीली एक्सपैंड या कंट्रैक्ट हो सकें. क्लियर? सिमिलरली जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनमें भी आपस में इनके दरमियान गैप्स रखे जाते हैं, ताकि गर्मियों में जब रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो हीट की वजह से एक्सपैंड हो रहे हों तो वो इजीली एक्सपैंड हो सके, उनमें इतने गैप्स हों कि वो एक्सपैंड हो जाए. अगर आप वहाँ पर गैप्स नहीं रखते तो वो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के हादसे का खतरा हो सकता है. क्लियर? द सेकंड पार्ट, डिफाइन हीट कैपेसिटी. तो आपने हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है. हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. क्लियर? द थर्ड वन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करना है. यहाँ पर आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हम लेफ्ट लाइन पे सब हेडिंग देंगे लेटेंट हीट डेफिनेशन, and then you can define it as the quantity of heat that changes unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization. Clear? The fourth one,
वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, कि गैसेस में जो है वो कंडक्शन ऑफ हीट क्यों नहीं होती। बेसिकली गैस जो है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान काफी स्पेसेस होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो यहां पर हम मेन हेडिंग बना सकते हैं द कंडक्शन ऑफ हीट इन गैसेस। So gas are poor conductors of heat, so conduction of heat does not take place in gases. However, heat is transferred through gases by another method called convection. The fifth part, what is meant by convection current? तो आपने convection current को यहाँ पर सिर्फ just define करना है. Gases also expand on heating, thus convection currents are easily set up due to the differences in the densities of air at various parts in the atmosphere. Clear? And you can also write the example. Convection current set up by electric, gas or coal heaters help to warm our homes and offices. Clear? And the part 6, how does heat reach us from the sun? sun से heat जो है वो किस तरह हम तक पहुंच जाती है। So यहाँ पर हम main heading बना सकते हैं that heat reach us from sun, and you can write the answer as our sun is the major source of heat energy. Heat reaches us neither by conduction nor by convection because the space between the sun and earth atmosphere is empty. Heat reaches us through radiations, light waves from the sun. Clear? The seventh part, what is greenhouse effect? तो greenhouse effect क्या होता है? सेंटर में मेन हेडिंग देंगे greenhouse effect, and then हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे. Glass and transparent polythene sheets allow radiations of short wavelength to pass through easily but not long wavelength of thermal radiations. Thus, greenhouse becomes a heat trap. Radiations from the sun pass easily through glass and warms up the object in a greenhouse. Clear? The eighth part, how many methods of transmission of heat are used? So heat की transmission के लिए हम कितने method जो है वो इस्तेमाल करते हैं? You can write the answer as the conduction, convection and radiation. Clear? So as you see the short questions. So now move to part 2, which consists of 3 long questions, and you have to attempt 2 out of these 3, and each long questions have 2 parts, A and B. And remember one thing, कि आप जिस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अपने पार्ट बी भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है. अगर आप पार्ट बी किसी और लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो मेक श्योर कि आपके दोनों पार्ट जो हैं वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के होने चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हुक्स लॉ. तो आपने हुक्स लॉ को स्टेट भी करना है और आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्टेट करेंगे एंड देन मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने उसका पूरा ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद फिर हम इलास्टिक लिमिट के बारे में यहाँ लिखेंगे. क्लियर? और इस तरह से हम इलास्टिक लिमिट को हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस ग्राफ. क्लियर? नाउ मूव टू पार्ट बी. अ मैन हैज पुल्ड द कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन. सो फाइंड द वर्क डन बाय द मैन. अब जैसा कि इस न्यूमेरिकल में आपको फोर्स गिवन है 300 न्यूटन और जो डिस्टेंस जो कि कार्ट ने मूव किया है दैट इज 35 मीटर. So as we know the formula of work done that W is equals to F into S. So इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,500 joule. Clear? So work done by the man that is equals to 10,500 joule. Now question number 6 part A. What is specific heat and explain with examples and derive its mathematical formula. तो अपने specific heat को first of all define करना है. Define करने के बाद then हम उसकी explanation देंगे proper and then मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रॉपर ड्राइव करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ड्राइव करने के बाद लास्ट में आप उसका यूनिट भी मेंशन करेंगे. क्लियर? नाउ द पार्ट बी. अ स्टूडेंट प्रेसेस हर palm by her thumb with a force of 75 Newton. How much would be the pressure under her thumb having contact area of 1.5 centimeter square? So force जो है यहाँ पर exert की जा रही है 75 न्यूटन की, और एरिया जो है वो गिवन है आपको 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, और सेंटी को खत्म करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 10,000 से. दैट इज 100 into 100. ओके, इट बिकम्स 10,000. सो यहाँ पर आप 10,000 से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे एंड यू कैन write the answer that is equals to 1.5 into 10 to the power minus 4 meter square. So अब आपने फाइंड करना है यहाँ प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है P is equals to F over A. जस्ट इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 into 10 to the power 5 Newton meter square. Clear? And which is also equals to Pascal. Question number 7. Part A. What is convection and explain the process. So convection को आपने डिफाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम उसका प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करेंगे विद एन एक्सपेरिमेंट. क्लियर?
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सेम एज इट इज हम इस लॉन्ग को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ पार्ट बी, how much ice is melted by 50,000 joule of heat, latent heat of fusion of ice that is equal to 3,36,000 joule per kilogram. So अब जैसा कि यहाँ पर आपको heat given है delta Q which is equal to 50,000 joule, and similarly latent heat of fusion which is HF and that is equal to 3,36,000 joule per kilogram, और आपने find करना है mass. As we know the formula that delta Q is equals to M into HF. So आपने mass find करना है तो HF को further वहां जाकर divide कर देंगे and it becomes M is equals to delta Q over HF. और further हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15 किलोग्राम. एंड फर्दर इसको हम जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन किलो की वैल्यू होती है 1000, तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर इज 150 ग्राम. क्लियर? सो आई होप ये पेपर आपको क्लियर हो गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.